Good morning, my dear students. So, book number 5, page number 61. Come to page number 61. So, to what we are going to read today? हमने लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था इवैल्यूएशन 2 उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. हाउ टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये सब पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एनिमल वर्ल्ड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. सी, हमने एलकेजी में भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, इंसेक्ट्स. सो सी, wild animals, farm animals, pet animals, water animals, birds and insects. We will read about these things. So let's start. Turn your page to 62. Page number 62. Book number 5. Page number 62. Recap. हमने कब पढ़ा था ये वाला? एलकेजी में पढ़ा था. तो सिर्फ रिकैप देखेंगे. लुक एट द पिक्चर्स, सर्कल द वाइल्ड एनिमल्स एंड टिक द फार्म एनिमल्स. राइट द नेम्स. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. सी, पिक्चर्स आर हियर. यू हैव टू राइट द नेम्स एंड द हेल्प बॉक्स इज हियर. आपको पता है सब एनिमल्स का नाम. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर. होल्ड योर पेंसिल. आप लोग पेंसिल पकड़ो अपना. आपके पास पेंसिल है ना? कि छुट्टियों में कहीं पर रख दिए हो आप लोग? हाँ. सो लेट्स स्टार्ट. सी, फर्स्ट क्या है? सर्कल द वाइल्ड एनिमल्स. जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें सर्कल करेंगे. सो बिफोर दैट पुट द डेट. व्हाट इज टुडेज डेट? 04/01/2022. नया साल आ गया. हाँ, 2021 चला गया. न्यू ईयर इज गोइंग ऑन. सो 2022. This one is wild animal. Circle it. Wild animal. You have to circle the wild animals. Wild animal. हाँ, ये हमारे साथ नहीं रहते. This is pet animal or farm animal. Farm animal. See, this side wild animal. Wild animal. हाँ, rhinoceros. Rhino. सो अदर्स जो बच गए हैं वो क्या है? हमारे पेट एनिमल्स है और फार्म एनिमल्स है. सो यू हैव टू टिक देम. आपको टिक करना है. सो टिक देम एंड व्हाट यू हैव टू डू? राइट द नेम्स. यहाँ पर देख के नेम्स लिखना है. से LION लायन. दिस वन इज लायन. राइट डाउन LION लायन. टाइगर. हाँ. bear, BEAR, bear. donkey, DONKEY. ship, SHEEP, ship. cow, COW, cow. elephant, horse, pig. And this one is rhino, RHINO, rhino. This you have to do. Now come to page number 63, sorry, 63. Recap. Look at the pictures, identify the animals and write their names. Take the help of the help box. Pictures are there, help box is here. So let's start. This is pigeon. Identify the animal. Who is this? What is it? It is pigeon. PIGEON. Pigeon you have to write. Then see cat. I am writing pigeon. PIGEON. Then cat. CAT, cat. This one is shark. SHARK, shark. SHARK, shark. Crab. CRAB, crab. Then dog. This you know, octopus. Parrot. Crow. You can take the help of the help box. So do it. Now turn the page. Insects. Page number 64. See, you can see so many insects here. You have to name them. These are the pictures of some insects. See, dragonfly, ladybird, caterpillar, honeybee, beetle. Once again,
They are insects. Dragonfly, ladybird, caterpillar, honeybee, beetle. Okay. So they are insects. Some insects you know. For example, this one you know already. This is butterfly and this one is housefly. Now come to page number 65. We are going to do match it. See, ladybird. Now find out the name of this insect. This is ladybird. Put the date 04/01/2022. Ladybird. Then see what is this? This is caterpillar. Here is the caterpillar. Dragonfly. Where is the dragonfly? Here is the dragonfly. Then this one beetle. Here it is beetle. Next see butterfly and housefly. Okay, this is today's work. Now I am going to give you the notebook work. So dear students, your notebook work, put the date, animal world, which you have seen in page number 62. You have to write here. See, these are the wild animals: lion, tiger, bear, elephant, rhino. Two times you have to write each. Here comes the farm animals: donkey, sheep, cow, horse, pig. So 2 times you have to write here. I have written like this. Do the same pattern. Now turn your page. What you will see? The names of insects. Put the date. Insects. Dragonfly, DRAGONFLY, dragonfly. LADY, lady, BIRD, bird, ladybird. 5 times you have to write. Then honeybee and beetle. The spelling of caterpillar I have left. Others 4 I have written. In next class I will give you more words you have to learn. The name of caterpillar, housefly, butterfly. Here are the other names. So you have to learn them. But today's work, notebook work is this much. Do it.